by taking the diagram of this. So let's have a diagram of this. पहले बात मत करिए. इसको डिवाइड करिए into 18 percent 28. पर डायग्राम होगा, लेवलिंग होगा, वैसे ही करना. Is supposed to be endometrial lining है. These are the blood vessels actually. This is the middle, that is day 40. As we have taken the menstrual cycle, 28 days. This is primary follicle, secondary follicle,
tertiary follicle, Graafian follicle, ovulation, formation of corpus luteum, matured corpus luteum, and degenerated corpus luteum. हॉलीडेज के बारे में बता चुके हैं कि टॉर्सियरी फॉलिकल से स्टार्ट होता है और एंट्रम अपीयरेंस, लेकिन ओरिजिन हो जाता है सेकेंडरी उस साइड से, सेकेंडरी फॉलिकल से, बट उसका अपीयरेंस हो जाएगा टॉर्सियरी में एंड मोर प्रोमिनेंट इन द ग्राफियन फॉलिकल. So the process called as ovulation. यहाँ पे दो पिक दिखेगा आपको एस्ट्रोजन का, and one peak for progesterone. And hormone from the ovary, that is ovarian hormone. So it is very important the name of the hormone. This is FSH. This is LH. This is estrogen. This is progesterone. Means this is pituitary hormone. किस डे पे क्या इवेंट होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट है. This is ovarian hormone. This is ovarian follicle. And this is the uterine endometrium. And this is the days. As you can clearly see, this is primary follicle. This is secondary follicle. This is tertiary follicle.
This is mature Graafian follicle. This is here we can say ovulation. These two are corpus luteum. And this is degenerated corpus luteum. यहाँ पे bleeding होगा. So these are the blood clot. So these are the two peak of estrogen. ये हो गया LH surge. This is the peak number 1. This is the peak number 2. इसका ना एस्ट्रोजन का. प्रोजेस्टेरोन का सिर्फ एक ही पीक होता है, that is after ovulation. हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन किए हैं कि ओवुलेशन से पहले कॉर्पस लुटियम तो एब्सेंट है, so there is no elevation or increasing quantity of progesterone. But before ovulation, after ovulation, estrogen का quantity तो increased रहेगा. Before ovulation, it is maximum, that is under the influence of the ovarian follicle development. And when the corpus luteum becomes fully matured, that also secretes a small quantity of estrogen. And इसीलिए estrogen का second peak आएगा. ठीक है? बन गया? थोड़ा सा जल्दी करिए. स्टार्ट करते हैं. Everybody is see here so that I can explain you the total menstrual cycle, a very important topic of this chapter, which is related with also the next chapter, reproductive health. Carefully, ध्यान से सुनना, किसी को समझ में नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना. Day 1 to day 4 to 5. Day 1 to day 4 to 5. This is the first phase called as what? ना menstrual phase. तो menstrual phase में क्या होगा ना, progesterone level बहुत ही low रहता है, and progesterone we know that maintain the endometrium thickness, and because of the absence of the, that is less presence or almost nil quantity of progesterone in the blood, that unable to maintain the thickness of the endometrium, and that is why the endometrium wall become ruptured, the blood vessels become ruptured, leads to the blood clot. And this quantity of the blood which is released is approximately, that is 40 to 50 ml. 40 to 50 ml of blood to be released within the entire 4 to 5 days duration of menstrual phase. And the blood which is immediately released out will be clot immediately inside the uterus. ये जो blood है ये immediately क्या होगा ना, uterus के अंदर clot हो जाएगा. ठीक है? So these are actually blood clot, that is why I have written. These are blood clot.
But uterine endometrium or uterus wall contains a specific enzyme called as fibrinolytic enzyme. And that fibrinolytic enzyme will dissolve this clotted blood. And that is why the blood which is comes through the vaginal orifice are in the liquid form. So liquid form of blood which is comes out through the vaginal orifice during the menstrual phase of the menstrual cycle is already clotted blood become dissolved. And that is why menstrual blood never again clot. Right? Now, menstrual phase complete हो गया, duration हो गया 4 to 5 days. आप देख सकते हैं एस्ट्रोजन लेवल भी नॉर्मल रहता है, मिनिमम रहता है, प्रोजेस्टेरोन ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है. Now the FSH and LH secretion from the pituitary will start. As the FSH and LH secretion begin to continue to secreted from the pituitary, that influence, हम लोग कल पढ़े थे, FSH and LH is the pituitary hormone which is regulate the ovarian follicle to be matured in the ovarian cycle. तो इसीलिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन ये प्रोसेस कंटिन्यू किया. जैसे ये कंटिन्यू करेगा FSH and LH का एक्टिविटी और बढ़ेगा एंड एस्ट्रोजन विल कंटिन्यू टू स्टार्ट. एस्ट्रोजन हम लोग पढ़े थे दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स और दैट इज ग्रैनुलोसर सेल्स. तो जैसे ही फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी स्टार्ट होगा एंड एस्ट्रोजन का सिक्रेशन इंक्रीज करता रहेगा एज दिस फॉलिकुलर डेवलपमेंट और ओवेरियन फॉलिकल विल begin to continue to form from primary to secondary to tertiary to and that is matured follicle, right? And इसीलिए हम देख सकते हैं when it is being fully matured, that is Graafian follicle, the secretion of the estrogen is in the very high. The high estrogen, very important, the high estrogen peak just before the ovulation is act as a positive feedback to the FSH and LH. Is act as a positive feedback to FSH and LH. What is the meaning of positive feedback? Now X will stimulate the tissue to secrete more Y. Is called as what? Na positive feedback. X will inhibit the tissue to stop the secretion of Y. It is called as negative feedback. तो यहाँ पे X कौन हो गया? ना एस्ट्रोजन. टिश्यू कौन है? ना पिट्यूटरी. Y कौन है? FSH LH. तो X स्टिमुलेट कर रहा है FSH एंड LH को. हाई पीक ऑफ एस्ट्रोजन. आप बोलेंगे सर एस्ट्रोजन तो पहले से ही था, तो फिर एस्ट्रोजन ने FSH LH को उससे पहले क्यों पिक नहीं किया, उसको क्यों इंक्रीज नहीं किया? नो, एस्ट्रोजन एक क्वांटिटी में रीच करने के बाद पॉजिटिव फीडबैक करेगा. So here not only the estrogen, here we can say quantity of estrogen act as a positive feedback. अगर यही एस्ट्रोजन का क्वांटिटी कम हो गया तो पॉजिटिव फीडबैक नहीं होगा. And that high estrogen just prior to ovulation, that quantity of the estrogen prior to ovulation is very high. And that act as a positive feedback to the FSH and LH. And that is the reason why all of a sudden FSH and LH peak will increase and that is called as specifically LH का increasing ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? LH surge. And LH along with the FSH, LH is a ovulatory hormone. And इसीलिए आप देख सकते हैं immediately क्या हो रहा है ना, ovulation will be occurs. FSH भी जरूरी है क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में बोला था कि FSH के व्हाट ना इन्फ्लुएंस से ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ओवरी के पूरा क्लोज आ जाता है. So closing of the Graafian follicle to the wall of the ovary under the influence of FSH. And ये जो secondary oocyte है वो भी close आ जाता है, that is under the influence of FSH. FSH का भी रोल है, but उसको ultimately release कौन करेगा? ना LH. That is called as ovulation. Clear है? Duration कितना हो गया? ना 4-5 to day 13 तक. ये जो 7 to 8 duration हो गया. This is the phase number 2, that is follicular phase or proliferative phase. हम लोग कल पढ़े थे. नाउ ओवुलेशन हो गया डे 14 में. दिस इज द थर्ड फेज. ओनली ड्यूरेशन कितना दिन है? 1 डे ड्यूरेशन. नाउ दिस ओवुलेशन के बाद क्या जाता है ना, पोस्ट ओवुलेटरी फेज एंड दैट इज कॉल्ड एज लुटियल फेज और प्रोजेस्टेशनल फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज और सिक्रेटरी फेज. क्लियर? Now this is the duration from day 15 to day 28.
तो आप बोलिए डे 14 टू 28 ये ड्यूरेशन कितना हुआ? एग्जैक्टली 14 डे का ड्यूरेशन हुआ कि नहीं? इसीलिए लुटियल फेज हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी फीमेल में. In any female, the luteal phase is always constant. Even though the menstrual cycle duration female to female vary करता है, हम लोग को पता है, but although the variability is occurs in the first phase, second phase, third phase, not in the fourth phase. So fourth phase is common to all. So 14 days का duration luteal phase every female में होगा, and इसी को हम लोग बेस करके day of ovulation calculate करते हैं. If the day of ovulation, the menstrual cycle duration is 28 days, then minus 14 कर देंगे तो आ जाएगा day of ovulation, that is 14th day. अगर किसी फीमेल में menstrual cycle का duration 32 days का है, then minus 14 कर देंगे तो कितना निकला? 18. तो 18th day is the day of ovulation. So simply minus 14 कर देंगे from the menstrual cycle duration, it will be the day of ovulation, right? क्यों? समझ में आ गया? Because it is fixed for all female. Now listen to me very very carefully. जैसे ovulation हो जाता है, immediately Graafian follicle ruptured हो गया, Graafian follicle degenerate हो गया, that to form the second endocrine gland, temporary endocrine gland called as corpus luteum. जैसे ही कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन हो जाता है, इमीडिएटली देखो प्रोजेस्टेरोन बिफोर ओवुलेशन नील था. Immediately the progesterone secretion will start and the estrogen secretion will immediately एकदम all of a sudden become decreased. Estrogen secretion decrease and progesterone secretion starts, and this progesterone secretion will continue as the corpus luteum getting matured and matured. And mature corpus luteum will also secrete what? Estrogen. इसीलिए immediately ovulation के बाद देखिए estrogen तो कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही formation of corpus luteum, जैसे corpus luteum matured होता है, फिर से estrogen का secretion start होता है. समझ में आया? And that is why we will found the 2 peak of estrogen but 1 peak of progesterone. तो आपको पूछेगा कि progesterone and estrogen which is the main secreted after the ovulation ना? progesterone. 2 peak है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का आफ्टर ओवुलेशन, बट मेन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन? ना थिकनेस. आप लोग देखेंगे जहां से एस्ट्रोजन स्टार्ट हुआ है, थिकनेस देखो एंडोमेट्रियम का स्टार्ट हुआ है. आफ्टर द मेंस्ट्रुअल फेज the endometrium thickness become gradually increased because the estrogen level is increasing, and ओवुलेशन के बाद भी एस्ट्रोजन इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए उसका थिकनेस और भी इंक्रीज करेगा, एंड दैट मेंटेन्ड बाय व्हाट? हाई प्रोजेस्टेरोन along with estrogen. Remember, high progesterone along with estrogen will act as a negative feedback to FSH-LH. पॉजिटिव फीडबैक तो समझ में आ गया था. आप देखिए नेगेटिव फीडबैक, प्रोजेस्टेरोन भी नेगेटिव फीडबैक करता है, एंड एस्ट्रोजन का जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक का काम करता है. आप बोलेंगे कि सेम एस्ट्रोजन पॉजिटिव कर रहा था, अभी सेम एस्ट्रोजन नेगेटिव कैसे कर रहा है सर? न करता है. कैसे? न बिकॉज ऑफ द कंसेंट्रेशन अमाउंट. एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा तो पॉजिटिव फीडबैक करेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा तो नेगेटिव फीडबैक करेगा. एंड ये अमाउंट डिसाइड कब होता है? ना बिफोर ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन. बिफोर ओवुलेशन हाई होता है, so positive feedback. After ovulation low हो जाता है, and that low quantity of progesterone and estrogen will act as a negative feedback along with the progesterone. And आप देख सकते हैं जैसे ही एस्ट्रोजन का पीक यहाँ पे देखो प्री ओवुलेटरी फेज में ही देख लीजिए, जैसे ही एस्ट्रोजन का पीक कम हुआ, देखो एलएच जो सर्ज था, जो एफएसएच का जो सर्ज था, वो तुरंत डिक्रीज किया कि नहीं? And that again decrease under the influence of estrogen progesterone after the ovulation. नेगेटिव फीडबैक. आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द नेसेसरी फॉर द नेगेटिव फीडबैक? दिमाग में आएगा, आना चाहिए. सोचिए ये तो ओवुलेशन हो चुका है, ये तो सेकेंडरी oocyte है. अगर ये फर्टिलाइज हो गया, अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो ये तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा. एम्ब्रियो अगर फॉर्म हो गया तो प्रेग्नेंट हो गया फीमेल. इफ द फीमेल बिकम प्रेग्नेंट, इज दैट इट नेसेसरी टू रिलीज द सेकंड ओवम अगेन? एंड सेकेंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट कौन करेगा? वही एफएसएच एंड एलएच. तो एफएसएच एलएच शुड बी डिक्रीज्ड, otherwise the second ovarian follicle will again start.
आप समझे कि नहीं? अगर प्रेगनेंसी हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो हम लोग को सेकेंड ओवेरियन फॉलिकल डेवलपमेंट को रोकना पड़ेगा। कौन रोकेगा? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बाय एक्टिंग एज ए नेगेटिव फीडबैक टू द एफएसएच एंड एलएच। ठीक है। नाउ अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये फर्टिलाइज होगा या तो फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर फर्टिलाइज हुआ, ये कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा तभी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगा ना। आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कि हम लोग पढ़े थे कि LH इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन व्हिच मेंटेन द कार्पस लुटियम। भूल गए क्या? नहीं भूलना है, सब लिंक है। आपको क्या लगता है ये छोटा मोटा चीज है? नहीं, सबके साथ सबका लिंक है। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में एंडोक्राइन में पढ़े थे कि LH इज ए ओवुलेटरी हार्मोन। फंक्शन बता रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। फंक्शन नंबर 1 ओवुलेशन, फंक्शन नंबर 2 फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कार्पस लुटियम, थर्ड सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। These are the three functions of LH. तो LH का फर्स्ट फंक्शन देख चुके हैं, ओवुलेशन। सेकंड फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लुटियम। थर्ड फंक्शन क्या है? मेंटेनिंग द कार्पस लुटियम टू कंटिन्यू द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन सो दैट द प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू। लेकिन हम अभी देखें कि प्रोजेस्टेरोन तो इनहिबिट किया एफएसएच एलएच को, तो LH एंड एफएसएच तो डिक्लाइन कर गया है, तो हु विल मेंटेन दिस कार्पस लुटियम इन एब्सेंस ऑफ LH इफ द प्रेगनेंसी ऑकर? आपको तो प्रोजेस्टेरोन चाहिए ना, तो प्रोजेस्टेरोन कैसे सीक्रेट होगा? जब प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होगा, होना है मतलब कार्पस लुटियम तो मेंटेन करना पड़ेगा। एंड हु विल मेंटेन द कार्पस लुटियम? एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि LH डिक्लाइन कर चुका है। HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, क्योंकि प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुका है। प्रेगनेंसी हो गया है तो आपका ये जो जाइगोट है ये क्लीवेज स्टार्ट कर चुका है। क्लीवेज स्टार्ट करके एक पर्टिकुलर डे के बाद ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म होगा। पढ़े हो ट्रोफोब्लास्ट? एंड दैट ट्रोफोब्लास्ट विल सीक्रेट द HCG हार्मोन। बिगिनिंग में प्राइमरीली द ट्रोफोब्लास्ट विल सीक्रेट द HCG एंड दैट HCG क्वेश्चंस आएगा गारंटेड। ये क्वेश्चंस मिलता है कि which of the following hormone will do the same function if the pregnancy occurs, that is maintenance of corpus luteum, na HCG in absence of LH. So HCG will take over the function of LH to continue to maintain the corpus luteum so that progesterone will continue and the pregnancy will continue. And same HCG फिर से कहां से स्टार्ट होगा ना? जैसे ही प्लेसेंटा फॉर्म हो जाएगा तो HCG का क्वांटिटी और बढ़ेगा तो ये कार्पस लुटियम और मेंटेन होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल और हाई होगा। आर यू गेटिंग मी? ये था फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा? LH तो ऑलरेडी डिक्लाइन कर चुका है, HCG तो एब्सेंट है क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, तो दिस कार्पस लुटियम इज अनएबल टू मेंटेन। कार्पस लुटियम अनएबल टू मेंटेन, डीजेनरेट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन डिक्लाइन किया। मैंने ये जो साइकिल दिखाई है नॉन प्रेगनेंसी के केसेस में। सो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देखो डिक्लाइन किया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन किया तो एंडोमेट्रियम अनएबल टू मेंटेन। एंडोमेट्रियम देखो फिर से रप्चर स्टार्ट हुआ कि नहीं? एंड द सेकेंड साइकिल विल अगेन स्टार्ट। समझ में आया? पूरा खेल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये उसको स्टिमुलेट कर रहा है, वो इसको इनहिबिट कर रहा है। अगर फंडा क्लियर हो गया तो नेक्स्ट चैप्टर भी आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है? बढ़िया, चलिए आगे। Phases. Number 1, menstrual phase. Day 1 silent to day 4 to 5, that is 4 to 5 days. एक menstrual cycle में तो ऐसा कुछ एक बार में होता है। प्रॉब्लम क्या है? हाँ? ऐसा कुछ तो एक menstrual cycle में एक बार में दोनों बारी में
ये जो हम लोग देखे एक ओवरी में हो रहा है, दूसरा ओवरी तो इनहिबिटेड रहेगा। मैंने क्या बोला था, अल्टरनेट मंथ में होगा। नहीं, अल्टरनेट मंथ में होगा। मतलब ये फॉलिकुलर फेज का जो ड्यूरेशन हो ना, वो लग रहा है कि हम लोग को 30 डेज है, लेकिन एक्चुअली कितना है, इंटू 2। हम लोग तो एज ए होल डिस्कशन करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज डे 1 टू डे 4 टू 5, 4 टू 5 डेज। पॉइंट्स यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल ब्लीडिंग that is approximately 30 to 50 ml. Clotted blood in uterus dissolved by fibrinolytic enzyme. So that blood of menses never clot again. Second phase, number 2, follicular or proliferative or pre-ovulatory phase. Duration day 4 to 5. Day 4, 5 to day 13. ड्यूरेशन हो गया है 7 to 8 days. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, खाली मेन पॉइंट एक दो पॉइंट, जैसे कि हाई एस्ट्रोजन just before ovulation, that is peak of estrogen. High estrogen just before ovulation act as positive feedback to both FSH and LH, causing LH surge leads to ovulation. Number 3, ovulatory phase. Ovulatory phase, that is day 14, 1 day. ये मैंने डे 14 दिया है किसके सेंस में ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज. सो यहाँ पे बस हम लोग को याद रखना है डे ऑफ ओवुलेशन इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14. ये 14 का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, याद रखिए. नंबर 4, लुटियल फेज और सिक्रेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज.
अच्छा, ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि ये तो साइक्लिक प्रोसेस है ना। तो वैसे ही सेकेंड फेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज बोल सकते हैं कि नहीं। दिस इज द फेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज, सो इट इज कॉल्ड एज पोस्ट मेंस्ट्रुअल और प्री ओव्यूलेटरी। वैसे ही फोर्थ फेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, पोस्ट ओव्यूलेटरी और प्री मेंस्ट्रुअल। समझ में आया? And this is always fixed, that is from day 15 to 28 और 29, मान लेते हैं 28, सो यहाँ पे हो गया 14 days, always fixed. In all. So here the high progesterone and estrogen act as negative feedback to FSH and LH, prevent further ovarian follicle development. टू चांसेस हमने बात किया अभी, नो फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ progesterone decrease as LH decreases and corpus luteum unable to maintain. So LH decreases and corpus luteum unable to maintain, so progesterone इसीलिए decrease किया। अगर fertilization हो गया progesterone continue, that is HCG will do the same function of LH. And मैं हर चीज लिख नहीं रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि what is that function, ना maintenance of corpus luteum to continue the secretion of progesterone. ठीक है, पहले ट्रोफोब्लास्ट से सीक्रेट होगा, then it is maximum again continue to secrete from the placenta. पहले ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट करेगा, नहीं तो प्रेगनेंसी तो लॉस हो जाएगा ना तुरंत, क्योंकि ये सब मतलब डे का खेल है, डे डे, समझ रहे हो कि ये देखिए ये जो एलएच का जो सिक्रेशन है वो डिक्लाइन कब तक कर जाएगा, डे 25 26 तक डिक्लाइन कर जाएगा कि नहीं। मतलब डे 25 26 मतलब 14 to 25, मतलब मान लीजिए 7 to 8 डेज की 10 डेज तक वहां पे ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म हो चुका होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ट्रोफोब्लास्ट वहां पे विद इन 10 डेज कंप्लीटली फॉर्म हो गया होगा, एंड दैट विल सीक्रेट द प्रोजेस्टेरोन। जैसे ही यहाँ पे एलएच डिक्लाइन किया
वहां पे एचसीजी सिक्रेशन स्टार्ट हो गया होगा। ये सब डे का खेल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड इसीलिए तो बोला जाता है कि एवरी कॉपुलेशन डज नॉट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, एवरी फर्टिलाइजेशन डज नॉट लीड्स टू प्रेगनेंसी। थोड़ा सा भी अगर कहीं पे इधर उधर हुआ तो प्रेगनेंसी लॉस्ट। चलिए कंप्लीट करिए, मुझे जल्दी बोलिए, नेक्स्ट पेज में जाएंगे। क्या समझ रही थी तुम इतने टाइम से? खाली लिखने में व्यस्त हो। रामायण खत्म हो गया, पता नहीं चला कि सीता मेल थी कि फीमेल थी। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ती हो? क्या लिखा है यहाँ पे? नेगेटिव फीडबैक हुआ तो एफएसएचएलएस डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा ना, तो वही तो मैंने लिखा। डिक्रीज किया बोल के तो एचसीजी की जरूरत पड़ा। अगर डिक्रीज नहीं करता तो एचसीजी की जरूरत क्यों पड़ता? अरे क्या क्वेश्चन तुम्हारा, समझ में आया कि नहीं? खाली लिखती हो, समझती नहीं हो क्या? चले हम लोग नेक्स्ट पेज में। अभी प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन जो तुम्हारा था, तो अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड असेसमेंट करेंगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ gonadotropins and what is the amount of ovarian hormone found in the blood? Gonadotropin means hormone secreted from pituitary, that is FSH and LH, कम रहेगा। ओवरियन हार्मोन एस्ट्रोजन कम रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हाई रहेगा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों ऑपोजिट इन नेचर। प्रोजेस्टेरोन यूट्राइन मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा, एस्ट्रोजन यूट्राइन मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा। अब प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा फॉर्म हुआ है, इम्प्लांटेशन हुआ है, तो फीटस शुड बी रिलीज्ड और फीटस शुड बी स्टिक टू द यूटेरस। इम्प्लांटेड है, तो आप अगर यूटेरस का मोटिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो चांसेस ऑफ एबॉर्शन इज देयर और नॉट? Who will decrease the uterine motility? Na progesterone. Who will increase? Estrogen. इसलिए एस्ट्रोजन का क्वांटिटी नील हो जाएगा, ऑलमोस्ट कम हो जाएगा पूरा, लेकिन प्रोजेस्टेरोन पूरा पिक रहेगा, बहुत हाई रहेगा। And that high progesterone will inhibit the uterine motility to continue the pregnancy. इसीलिए प्रेगनेंसी जब खत्म होगा, मतलब पैर्चुरेशन जब स्टार्ट होगा, जेस्टेशन पीरियड जब खत्म होगा, तब प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन करता है, एस्ट्रोजन हाई होता है। एस्ट्रोजन को इंक्रीज करना है यूट्राइन मोटिलिटी को, ताकि पैर्चुरेशन इजी हो। पढ़ेंगे बात। मेनोपॉज, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनोपॉज के बाद FSH and LH increases in blood. मतलब पिट्यूटरी हार्मोन इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया ब्लड में, लेकिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज in blood and becomes nil.
ऐसा क्यों? मेनोपॉज के बाद प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन पूरा नील हो जाता है धीरे धीरे, एंड एस्ट्रोजन सॉरी एफएसएच एलएच इंक्रीज करता है ब्लड में। कारण मैं बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, खाली कारण सुन लीजिए। व्हाट इज द टारगेट ऑफ एफएसएच एंड एलएच? ओवरी। व्हाट इज द टारगेट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन? यूटेरस। एफएसएच एलएच सिक्रेट हुआ पिट्यूटरी से, टारगेट किसको किया? ओवरी। ओवरी कंटेन्स द रिसेप्टर ऑफ एफएसएच एंड एलएच। हम लोग पढ़े थे एंडोक्राइन में, membrane bound receptor, because these are the protein hormone and that is what, na lipid insoluble. The receptor present in the FSH and LH will be lost. Why? आप बोलेंगे सर ऐसे सडनली कैसे लॉस हो जाएगा? ऐसा इसीलिए लॉस होगा क्योंकि हम लोग पढ़े थे फॉलिकुलर एट्रेसिया, याद करिए। फॉलिकुलर एट्रेसिया इज द डिजेनरेशन ऑफ द, that is primary follicle or follicle starts after the parturition. एक फीमेल बेबी के पैचुरेशन के बाद स्टार्ट हो जाता है फॉलिकुलर एट्रेसिया, so which reduce the millions of the ovarian follicle into 60 to 80,000 per ovary at the time of puberty. And ये follicular atresia बंद नहीं होगा, that follicular atresia even after the puberty also continue. मतलब ये समझ लीजिए, ये जो फॉलिकुलर एट्रेसिया है कंटिन्यू करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब ओवरी में कोई भी प्राइमोडियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल बचा नहीं होगा, जीरो हो गया। अब अगर ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल है ही नहीं तो ओवरियन साइकिल कैसे होगा? ओवरियन साइकिल नहीं होगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहां से आएगा? इसीलिए रिसेप्टर लॉस हो जाता है, no respond by the ovary to the FSH and LH. That is why FSH LH become unused. तो FSH LH unused हुआ कि used हुआ? Unused हुआ तो उसका क्वांटिटी इंक्रीज करेगा कि नहीं? And that is why the FSH and LH increase in the blood because it is unused. There is no primary follicle left in the ovary to respond to FSH and LH. इसीलिए ओवरियन फॉलिकल नहीं होगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे डिक्रीज करते करते क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। एंड इसीलिए हम लोग पढ़े थे कि मेनोपॉज के बाद फीमेल में एस्ट्रोजन कम होने की वजह से ओस्टियोपोरोसिस होता है। याद आया? तो मैं कैसे लिंक कर रहा हूं हर टॉपिक को, आप लोग भी लिंक करिए, तभी तो क्वेश्चन इजी होगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे संभव है? अरे संभव है, दिल से चाहो तो सब कुछ मिलता है, नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं मिलता है। आगे बढ़े। Now we are coming to estrogen. It is found in non-primate female mammal. It is occurs in seasonal breeders. Estrogen level increases, leads to a strong sexual urge called heat period or period of heat. एंड इसीलिए उसको एस्ट्रोसाइकिल बोलते हैं। एस्ट्रोसाइकिल में किस हार्मोन का लेवल हाई होता है? एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई हो जाता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ओनली इन केस ऑफ सीजनल ब्रीडर इन नॉन प्राइमेट फीमेल मैमल्स। आप लोग देखेंगे नॉन प्राइमेट फीमेल मैमल्स जितने भी है सारे के सारे सीजनल ब्रीडर होते हैं।
seasonally they will reproduce, and that particular season में उनका estrogen level during the estrous cycle, the estrogen level become very high, and that will create a strong sexual urge, and that is called as heat period or period of heat, and this is the period in which the sexual intercourse or that is activity occurs between the male and female. लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि menstrual cycle में menstrual phase में there is no sexual activity between the male and female because it is a bleeding phase. समझ में आया? Now, दो टाइप है, एक है मोनोस्ट्रियस, एक है पॉलीएस्ट्रियस. Monoestrous means one estrous cycle in one breeding season. One breeding season में one estrous cycle होगा तो उसको क्या बोलेंगे? Monoestrous. Example: fox, deer, bat, recurrence of estrous cycle in one breeding season. Then example: mouse हो जाएगा, cow हो जाएगा, squirrel हो जाएगा, pig हो जाएगा. So these are actually the polyestrous. Complete. So this is all about the menstrual cycle and estrous cycle. As already told, this is a big point, big topic. इसे थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन समझ में आना चाहिए क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर को पूरा लिंक कर रहा है. So we are coming to the next topic of this chapter, and that is fertilization. Fertilization. We have fertilization which is takes place in the site called as what? Ampulla. पढ़े हैं? तो ampulla of fallopian tube. Site of the fertilization is ampulla of fallopian tube, and इसका चार अलग-अलग steps हैं. 4 steps or event. Number 1. Approach of sperm to ovum. Population occurs between the male and female gives rise to ejaculation of the semen. And I already have told you, one ejaculation contains how much number of semen? 200 to 300 million. Quantity कितना होता है semen का? 2.5 to 5 ml per ejaculation. That contains 200 to 300 million number of sperms. Now, it is very important to remember the lifespan of this sperm within male genital tract. जब तक मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एपिडिडाइमिस के अंदर जब तक स्पर्म प्रेजेंट है, हम लोग पढ़े थे कि एपिडिडाइमिस इज द साइट वेयर द स्पर्म बिकम मैच्योर्ड एंड स्टोर्ड. मतलब बिफोर इजैकुलेशन कि आफ्टर इजैकुलेशन? बिफोर इजैकुलेशन.
Before ejaculation, the lifespan of this sperm is many years. Once it is ejaculated, into the female genital tract, the lifespan drastically reduced to only 48 to 72 hours only. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्पर्म को रीच करने का बहुत ही कम टाइम है. Sperm has to reach the ovum at the site of ampulla for the purpose of fertilization within a short duration, within few hours. The site of capacitation मतलब activation. तो sperm activate कहाँ पे हुआ? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हुआ कि मेल जेनिटल ट्रैक्ट में हुआ? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एक्टिवेट होता है, कैपेसिटेट होता है, एंड वंस इट इज एक्टिवेट द लाइफ स्पैन बिकम्स रिड्यूस्ड. मतलब जब तक ये एक्टिवेट नहीं है, जब तक कुंभकर्ण सोया हुआ है, तब तक उसका डेथ नहीं होगा. बहुत दिन बचेगा. वो उठा दिया कुंभकर्ण को तो मरेगा. अब देखिए लाइफ स्पैन इसका एकदम था मेनी इयर्स. जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ तो उसका लाइफ स्पैन रिड्यूस कर गया 48 to 72 आवर्स ओनली. सो साइट ऑफ कैपेसिटेशन इज कॉल्ड व्हाट? ना फीमेल जेनिटल. और अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द इवेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कैपेसिटेशन. इवेंट ऑफ कैपेसिटेशन नंबर 1, स्पर्म का स्ट्रक्चर याद है? कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, राइट. Removal of cholesterol membrane. Because cholesterol membrane remove नहीं होगा, plasma membrane weak नहीं होगा, तो how do the sperm lysine will be produced by the acrosome? समझ में आ रहा है कि thickening of plasma membrane. Number 3, influx of calcium into sperm so that sperm motility increases. देखिए हम लोग पढ़े कि कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, याद है? यहाँ पे देखो कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ स्पर्म के अंदर, तो स्पर्म का जो फ्लैजेलर मूवमेंट है वो इंक्रीज कर जाएगा. दैट लीड्स टू द इंक्रीजिंग स्पर्म मोटिलिटी. मतलब फ्लैजेलर एक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो स्पर्म का स्पीड बढ़ जाएगा कि नहीं? कॉल्ड लीड्स टू विप्लस मूवमेंट. उसको बोलते हैं विप्लस मूवमेंट. एंड विप्लस मूवमेंट का स्पीड कितना होगा ना? 1.5 to 3.0 mm पर मिनट. ये उसका स्पीड हो जाएगा स्पर्म का. दिस इज कॉल्ड एज विप्लस मूवमेंट. एंड ये विप्लस मूवमेंट स्पर्म मोटिलिटी इंक्रीज की वजह से हुआ. दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम. ये था थर्ड इवेंट ड्यूरिंग द कैपेसिटेशन. नंबर 4, breakdown of decapacitation factor and formation of capacitation factor.
क्योंकि ये पहले डिकैपेसिटेड फॉर्म में था, तो डिकैपेसिटेशन साइट क्या है? मेल जेनिटल ट्रैक्ट। अंडरस्टैंडिंग है? कैपेसिटेड होने के लिए डिकैपेसिटेशन फैक्टर तो ब्रेक डाउन होना पड़ेगा ना, एंड कैपेसिटेशन फैक्टर विल फॉर्म. So these are the four state or event which is takes place during the capacitation, which leads to the drastic decrease in the lifespan of the sperm, and that is the reason why the sperm has a very low time to reach the site of fertilization, that is empty. ठीक है? Maximum sperm die. कितना था नंबर? 200 to 300 मिलियन. मैक्सिमम स्पर्म डेथ हो जाएगा, ऑलमोस्ट 99% स्पर्म का डेथ हो जाएगा. कारण क्या है? ड्यू टू एसिडिक पीएच, और क्या है ना, फैगोसाइटोसिस. तो फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट इन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, एसिडिक मीडियम और पीएच इन द यूटेरस. इन द, हम लोग पढ़े थे कि भल्वा के आसपास वहां पे यूरिन का एसिडिटी प्रेजेंट होता है, न्यूट्रलाइज तो होता है फिर भी एसिडिक रहता है, उसके वजह से मैक्सिमम स्पर्म का डेथ हो जाता है. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पर्म रीचिंग एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? ओनली 300 to 500 स्पर्म. समझे? तो एम्पुला में कितना स्पर्म रीच किया? ओनली 300 to 500. इजैक्यूलेट कितना हुआ था? 200 to 300 मिलियन. 99% डेथ हो गया. आप बोलेंगे सर अगर इतना ही डेथ होना था, अगर सिर्फ 300 to 500 स्पर्म को रीच करना था, तो व्हाट इज द नीड ऑफ सच ए नंबर ऑफ यूज स्पर्म इन द इजैक्यूलेटेड कंटेंट? दिमाग में आना चाहिए. और ऐसा क्यों है कि 20 मिलियन पर ml पढ़े थे, 20 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट अगर डिक्रीज किया तो इनफर्टिलिटी क्यों होता है? भाई अगर 300 to 500 स्पर्म रीच ही करना था, एंड ओनली वन स्पर्म नीड फॉर द फर्टिलाइजेशन, राइट? मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन. इतना स्पर्म की जरूरत क्या है? और पर ml 20 मिलियन से अगर कम हो जाता है तो इनफर्टिलिटी क्यों होता है? क्योंकि एसिडिक पीएच रहेगा, फैगोसाइटोसिस सेल्स रहेगा यूटेरस में. स्पर्म का काउंट अगर कम हो गया तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाएगा. जितना हाई स्पर्म काउंट होगा, possibility of the sperm to reach at the site of fertilization will more. समझेगी नहीं? अब ये एक तरीके का नेचुरल सिलेक्शन है. ये दिस इज द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू सिलेक्ट ओनली द कंपैटिबल स्पर्म, हेल्दी स्पर्म, फिट स्पर्म. 99 स्पर्म का डेथ हो जाता है, ओनली द फिट स्पर्म विल रीच एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जो डिफेक्टिव स्पर्म है, जो स्पर्म मोटिलिटी, लो स्पर्म मोटिलिटी है, वो सब फैगोसाइट होगा, कि जो स्ट्रॉन्ग मोटिलिटी है, जो फिट है, उसका फैगोसाइटोसिस होगा, जो वीक है उसका फैगोसाइटोसिस होगा. सो दैट द ओनली हेल्दी स्पर्म विल रीच द फर्टिलाइजेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन विल बी हेल्दी. समझे? सो दिस इज नॉट ए जोक, इट इज ए नेचुरल सिलेक्शन मेथड. ये होना चाहिए. क्लियर है? कंप्लीट करिए, मुझे कंफर्म करिए. नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. Penetration of sperm. Step number 2. Silent. Penetration of sperm. सर CA2 प्लस स्पर्म में जाकर यूटेरस पे आता है. तो पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म में आते हैं.
Sperm binds to ovum surface by chemical recognition called fertilizing anti-fertilizing reaction. And this mass binding of this sperm, ये जो sperm है ये तो mass होगा ना, बहुत ज्यादा होगा कि नहीं? Mass number of sperm bind with the ovum with the surface by means of the chemical recognition called as fertilizing anti-fertilizing reaction is called as what na agglutination. देख लेते हैं एक बार. This is actually supposed to be the protein called as fertilizing. The fertilizing protein of ovum, याद रखिए. किसका है fertilizing protein? Ovum. मैच कराते हैं. This is supposed to be the sperm. Sperm के साइड में सरफेस में और एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा कॉल्ड एज व्हाट ना एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन. दिस इज एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन. तो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन ऑफ स्पर्म और ओवम. स्पर्म मैच कर रहा है यहाँ पे. कंप्लीमेंट्री है कि आइडेंटिकल है? कंप्लीमेंट्री. अगर ये स्पर्म एंड ओवम दो अलग अलग स्पीसीज का होता तो क्या ये बाइंडिंग पॉसिबल है? दैट इज बाय फर्टिलाइजेशन इज ए स्पीसीज स्पेसिफिक. Now the sperm will be bind everywhere. अभी समझ में आया ना कि ये मास बाइंडिंग कैसे होता है? This is called as fertilizing anti-fertilizing reaction. So fertilization is a species specific. Species specific. ये था फर्स्ट इवेंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म. मतलब ये पेनिट्रेशन के लिए रेडी हुआ, पहले बाइंड हुआ, अब पेनिट्रेट करेगा. सिक्रेशन ऑफ व्हाट ना स्पर्म लाइसिन. And who secrete the sperm lysine? Acrosome. याद है? 3 different type of sperm lysine. Hyaluronidase, corona penetrating enzyme, and journal lysine or acrosine. Hyaluronidase that will dissolve. The hyaluronic acid polymer of granulosa cells. Corona penetrating enzyme
will dissolve the corona radiata. Zona lysine or acrosine. It is with ZP3 protein. मतलब जोना पेलुसिडा 3 प्रोटीन जोना लाइसिन और एक्रोसिन में होता है. जोना लाइसिन और एक्रोसिन. It dissolve the ZP3 protein of जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था कि इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन, याद है? एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज ZP3. तो ZP3 प्रोटीन इन द जोना पेलुसिडा विल बी डिसॉल्व्ड थ्रू द जोना लाइसिन. तो ये सीरियल है कि नहीं? This is first will release, this is second will release, and this is third will release. Sequence है. मैंने आपको ओवम का सरफेस दिखाया था. So this is all about the second penetration of sperm. Now coming to the number 3. Penetration of sperm में एक और इवेंट होता है. Penetration of sperm में और एक इवेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, and that is what? Na Na plus influx. Na plus influx into ovum surface or ovum membrane, causing depolarization. याद है पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन. Na plus influx होगा तो क्या होगा? मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड. डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन मतलब एक्शन पोटेंशियल की रेस्टिंग पोटेंशियल. एक्शन मतलब एक्टिवेशन. So Na plus influx into ovum membrane causing the depolarization of membrane, which prevent the further sperm entry, called fast block to check polysperm. ये बहुत ही रैपिड प्रोसेस है, इसीलिए फास्ट ब्लॉक बोलते हैं. First block to check polyspermy is due to Na plus influx or Ca2 plus influx. Na plus influx याद रहेगा. नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, एक्टिवेशन ऑफ ओवम. यहाँ पे दो इवेंट होता है. इवेंट नंबर 1, Jonah reaction and cortical reaction. Jonah reaction and cortical reaction ये फर्स्ट इवेंट है. इसमें होगा क्या? ना कैल्शियम इनफ्लक्स and cortical granule efflux leads to formation of fertilization membrane.
leads to formation of fertilization membrane, which act as slow block to check polyspermy. वहां पे फास्ट ब्लॉक था, ये क्या है? स्लो ब्लॉक किसके वजह से होता है? Ca2 प्लस इनफ्लक्स। समझ में आया कि नहीं? सो Ca2 प्लस इनफ्लक्स एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल इफ्लक्स gives rise to the slow block to check polyspermy. मैं भी दिखा देता हूँ डायग्रामेटिकली, आपको समझ में आ जाएगा। This is supposed to be the ovum and this is supposed to be the plasma membrane of the ovum. मैं यहाँ पे हाफ दिखा रहा हूँ, आप फुल दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। This is supposed to be the nucleus of the ovum. जिस साइड में न्यूक्लियस है उसको क्या बोलते हैं? एनिमल पोल की वेजिटल पोल? एनिमल पोल। तो ये ऊपर वाला जो साइड है वो एनिमल पोल है। And this is supposed to be the sperm which is coming to enter into the ovum through the animal pole, right? And this is zona pellucida, this is plasma membrane, and this is perivitelline space. And these are cortical granules. तो अभी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म के अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर? इनसाइड द साइटोप्लाज्म मतलब इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब होगा क्या ना, कैल्शियम इनफ्लक्स होगा। कैल्शियम इनफ्लक्स into the cytoplasm of the ovum that gives rise to अब देखिए ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का क्या हुआ ना, एक्सोसाइटोसिस हुआ। समझ में आया कि नहीं? बिकॉज ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, तो साइटोप्लाज्म सॉरी द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बिकम एक्सोसाइटोसिस की एंडोसाइटोसिस। अब देखिए कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर था वो बाहर की तरफ आ गया। बाहर की तरफ आ गया मतलब जोना पेलुसिडा के अंदर आ गया। जोना पेलुसिडा मैंने आपको बोला था नॉन सेल्यूलर प्रोटीन लेयर, तो ये प्रोटीन है तो स्ट्रेच करेगा उसको, फोर्स क्रिएट होगा कि नहीं उसके ऊपर, एंड दैट लीड्स टू अ क्रिएशन ऑफ ए लार्ज पेरिविटलाइन स्पेस। यहाँ पे पेरिविटलाइन स्पेस लेस हुआ कि मोर हुआ? मोर हुआ। नाउ दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, जो जोना पेलुसिडा पहले था अब चेंज हो गया फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। And now the sperm head will enter middle phase and tail lost. So who is preventing the further entry of sperm to prevent the polyspermy? ना fertilization membrane prevent करेगा कि नहीं? And ये fertilization membrane formation होने का कारण क्या था? Calcium influx and cortical reaction. इसलिए मैंने first event क्या लिखा है? Jonah reaction and cortical reaction. So Jonah reaction and cortical reaction gives rise to the prevention of the polyspermy by means of acting as a slow block. Clear है? और 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, यहाँ पे लिख लीजिए फटाफट। Only head enter, head and neck enter, क्योंकि हेड में क्या है? न्यूक्लियस है। नेक में क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। जरूरी है कि नहीं? लेकिन टेल एंड मिडिल पीस में तो कुछ और नेसेसरी चीज नहीं है, इसलिए लॉस हो गया। नाउ सेकेंड मियोसिस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, याद है? ब्रेकडाउन ऑफ
किस स्टेज में अरेस्टेड था मेटाफेज 2? So breakdown of metaphase promoting factor and formation of anaphase promoting complex. समझे कि नहीं? क्योंकि ये किस स्टेज में अरेस्टेड था मेटाफेज 2, तो इसीलिए मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा एंड किसको फॉर्मेशन करना पड़ेगा? एनाफेज. So MPF will break down and APC will form so that anaphase 2, telophase 2 finish होगा, meiosis 2 finish होगा, second polar body release होगा, matured ooted और ovum release होगा. समझ में आया? Complete. Last step is, that is number 4. Fusion of gametic nuclei. Male pronucleus N fused with female pronucleus N gives rise to क्या फॉर्म होगा? मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस N प्लस N क्या फॉर्म होगा? नो, सिनकैरियन. मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूक्लियस लिखा है कि सेल लिखा है? इसलिए जाइगोट और सिनकैरियन में डिफरेंस है. जाइगोट इज ए सेल, लेकिन सिनकैरियन क्या है? इट इज ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस. एंड जाइगोट क्या है ना? डिप्लॉयड सेल. फ्यूजन का नाम क्या है? एम्फीमिक्सिस. दैट्स इट. समझ में आया कि नहीं? एम्फीमिक्सिस के वजह से जाइगोट फॉर्म होगा, डिप्लॉयड सिनकैरियन दैट इज डिप्लॉयड न्यूक्लियस. तो फर्टिलाइजेशन हम लोग का फिनिश हो गया. नेक्स्ट क्लास में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे.